Today I am sitting with a very special guest on the show. His name is Lieutenant Commander Manish Katela. April 2011 की बात है. I had a severe setback. So when we were coming back from Indonesia, we had a small incident. There was one suspicious boat, and we were trying to coordinate with him. मैंने इतनी कमीशनिंग और इतने लॉन्चेस देखे उस ड्यूरेशन में जो शायद कुछ ऑफिसर्स अपना पूरा 20 या 30 ईयर्स का टेन्योर भी निकाल देते हैं और एक कमीशनिंग और एक लॉन्च भी नहीं देख पाते हैं फॉर वॉट एवर रीजन. सो वेन एवर वी यूज टू गो टू द डॉकयार्ड, हमारे रास्ते में लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग आती थी, शिप बिल्डिंग सेंटर, SBC इसको बोलते थे. सब ये बोलते थे यार ये ब्लैक होल है, क्या होता है कुछ नहीं पता, और इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है, पर वहाँ कोई जा नहीं सकता है. बनती सबमरीन्स हैं एंड वी नो कि वहाँ कौन सी सबमरीन्स बनती हैं. न्यूक्लियर सबमरीन्स आर बिल्ट इनसाइड शिप बिल्डिंग सेंटर एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल दोज प्रोजेक्ट्स. अच्छा, मैं पहले 15 दिन करके आता हूँ, देखता हूँ 15 दिन में एकेडमी जाके नहीं हुआ तो वापस आ जाऊँगा. 10 साल तक वापस ही नहीं आया. सो हाय गाइज, टुडे आई एम सिटिंग विथ अ वेरी स्पेशल गेस्ट ऑन द शो. His name is Lieutenant Commander Manish Katela, and ये एपिसोड मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि Manish is my coursemate, and I can tell you one thing, he's a naval constructor also, and from building ships and submarines worth thousands and thousands of crores, he has now managed to build an empire of fast fashion, Fuber, which is worth 250 crores. So welcome to the set, Manish. Hi Nikhil, thank you so much for inviting me here. It's an honor, to be here and discuss things with you. Thank you so much. Hi everyone. Like you guys know, there are various doorways of joining the armed forces in the officer cadre, and naval constructor is one of the branches which offers short service commission SSC NC to people who come from, let's say, marine engineering background, metallurgy, mechanical, architect, aeronautical, yeah, civil engineering. Yeah. So it's a very special branch because they are the ones who are responsible to build ships, submarines for the Navy. Yeah. And of course at various construction shipyards of our country, let's say GRSE, Masgao Dock, Goa shipyard और Cochin shipyard जहाँ पे हमारा aircraft carrier बना है. Yes. तो लेट्स हियर फ्रॉम फर्स्ट हैंड फ्रॉम मनीष की एक्चुअली एक नेवल कंस्ट्रक्टर ऑफिसर अपने करियर में करता क्या है, एंड हाउ मनीष हैज़ टेकन ऑल दीज लर्निंग्स टू द सिवी स्ट्रीट पोस्ट रिटायरमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. मनीष, क्यों सोचा यार, व्हाई डिड यू कम टू द नेवी? तू तो बनिया है, धंधा बिजनेस बिल्कुल. सो व्हाई नेवी? So you're right. I mean, the business was there in the blood because हमारा ट्रेडिशनल फैमिली में अगर अपन देखें तो एवरी बनिया मोस्टली आइदर इज़ अ CA और इज़ अ बिजनेस मैन. आई रिमेंबर इन माई इनिशियल डेज ऑफ स्टडीज़ व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, तब से मैंने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, एंड फॉर गुड 5 years आई यूज्ड टू गो विद हिम टू हिज शॉप आफ्टर माई स्कूल टाइम, and nobody even imagined that my father will ever allow me to study also, because he was handling the shop alone, and I was the one looking after whenever he was not available in station. But suddenly in 11th standard I told him कि I want to opt for science, and मेरे को Bansal classes join करना है, and surprisingly he gave the approval also just in one go. So that's how the studies came into my life कि okay, now I have a goal, science ले तो लिया तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी. So completed my 11th and 12th, went to Bansal classes, and the aim was कि अपने को IIT ही जाना है. Studied for it, worked very hard for it. फिर बंसल मतलब क्या? कोटा फैक्ट्री बंसल? हाँ, कोटा फैक्ट्री बंसल. I wanted to go to Kota, but my parents denied that. They said कि नहीं, you have to study in Jaipur only. So in 11th standard I was in Jaipur, but 12th standard मैंने जिद पकड़ लिया कि नहीं पापा, पढ़ाई नहीं हो रही जयपुर में, आप दुकान बुला लेते हो और थोड़े दिनों में कि आजा दुकान आजा, तो ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा. So 12th में I went to Kota, but there I was rejected by all the schools. They said कि 12th में हम एडमिशन नहीं लेंगे. So फिर बंसल क्लासेस में एडमिशन लेने का there was no point. I had to come back to Jaipur. But एक शर्त थी कि मैं घर पे नहीं रहूँगा, मैं बाहर रहूँगा, अपना सेल्फ स्टडी करूँगा. घर पे रहूँगा तो आप मुझे दुकान बुला लोगे. So I had to stay outside for 1 year. Being in Jaipur, being in Bansal classes Jaipur, I stayed outside, studied. But
मतलब whatever you say, I was not able to crack IIT, and I didn't appear for any other examination, only IIT and AIEEE. So it was a setback, क्योंकि एडमिशन अब हो नहीं रहा था कहीं पे भी, और IIT अपने को जाना था, IIT में क्लियर नहीं हो पाए थे. So I opted for a repeat batch of Bansal classes. So I went there for 3-4 days initially, and वहाँ से रियलाइज़ हो गया कि भैया रिपीट तो अपने से नहीं हो सकता, आप कहीं पे भी एडमिशन ले लो, जहाँ इच्छा हो वहीं पे ले लो. Thankfully things were in my favor, and there was a third counseling going on for AIEEE, and I got an admission in NIT Jaipur. I got a civil engineering branch, and for a good 4 years I was there in NIT Jaipur, completed my BTech. In my final year, I was the placement coordinator in NIT, and I was interacting with the Indian naval officers who were supposed to come to campus for the UES entry scheme. So I had no idea what UES entry scheme is, or I only had an idea that Indian Navy is coming and they'll be recruiting few of the students from there for maybe future courses, or maybe the directly induct in Indian Navy. So I went to the hotel in the morning when they came, and I met the officers who had come. I was fascinated to see them in uniform, and जो बाहर उनका आर्मर्ड व्हीकल खड़ा हुआ था वो भी बहुत हाई-फाई था, बहुत अच्छा लग रहा था. They asked me, okay, we'll meet you in the during the interview. I said, sir, I am not appearing for the interview. They said, why? So my answer was कि sir, my family will never allow me. मुझे पढ़ाई करा दी, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. अब ये फौज वौज तो मुझे पता है कि कोई चांस नहीं है, मेरा भी कोई इंटरेस्ट भी नहीं था और कोई इंक्लिनेशन भी नहीं था. But then he said कि नहीं यार, you should come for the interview at least and sit for the group discussion. I said ठीक है, then sir, in that case I'll have to go back and get my file. वो घर पे ही थी, मैं लेकर नहीं आया था. He said ठीक है, you go home, we'll directly reach your campus and you join us there. So I went home, came with my file. Group discussion happened. I remember the topic was narcotics. मेरे को ABCD नहीं पता नारकोटिक्स की, कुछ पता ही नहीं था भाई. बट फिर भी कुछ कुछ बोल दिया बिकॉज बोलना आता था. एंड ग्रुप डिस्कशन क्लियर हो गया. उसके बाद इंटरव्यू होना था. इंटरव्यू में दोनों ऑफिसर से पहले इंटरेक्शन तो हो ही चुका था, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल तो था कि ठीक है नॉर्मल बात तो कर ही लेंगे. उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, बस सिर्फ फैमिली के बारे में पूछा, बिजनेस के बारे में पूछा, पापा क्या करते हैं, और इंटरव्यू ओवर. आई डोंट नो उनको क्या पसंद आया क्या नहीं, बट माई नेम वॉज देयर इन द फाइनल लिस्ट ऑफ 13 स्टूडेंट्स हु वर सेलेक्टेड फ्रॉम माई कॉलेज टू गो एंड अपीयर फॉर दी SSB. कहाँ दिया SSB? SSB was SSB Bhopal. Okay. 33 SSB. Now the date given to us was November. I don't exactly remember, but 3rd week or 4th week of November was given to us कि you will have to come for the SSB interview. Now during the same duration we had our final 7th semester exams. So I had written a mail to the concerned department that sir, we may not be able to come for the SSB because we have our final exams scheduled for the particular duration. So kindly allot us a different date. And I spoke to them on the phone also. They said कि यार it completely depends whether you will get a second chance or not, because we are also not sure. And we didn't get any reply. But few of my course mates, out of 30, I think 7 or 8, they got a letter that you have to appear for the SSB on so and so date, and the date was 31st December, because it was a new year, so I remember that date. So you were supposed to report on 31st. This was 2010. 2010. Correct. Now the thing is, only 7-8 students got that letter, and rest 3-4 didn't get, and I was one of them. I didn't get a letter. So we were again confused whether to go or not go. Then I spoke to one of my senior who went for आर्मी का SSB कि क्या करना चाहिए बॉस, लेटर तो सबके पास नहीं आया है. ही सेड कि यार एक काम करो, लेटर सबके पास नहीं आया, ऐसा पॉसिबल है बिकॉज वो गवर्नमेंट स्पीड पोस्ट से आता है, तो सम टाइम इट गेट्स स्टक ऑल्सो एंड डिले भी हो जाता है. सो यू जस्ट गो, अगर नाम नहीं हुआ तो भोपाल घूम के आ जाना, है ना. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. बट जैसे हमने जाने का प्लान किया, so if you recall, there used to be a famous Andolan which happened in Rajasthan, Gujjar Andolan, where the railway tracks were not operational. I remember Bhati was my classmate. Bhati was my roommate in academy. Correct. Gujju. So roads were blocked. Yeah. So there was no way we could reach Bhopal on 31st. And there were a lot of family members, not only my family members, even my course mates of college. They said कि यार मत भेजो बच्चों को वहाँ पे, कहीं फंस जाएंगे रास्ते में, कोई मतलब नहीं है. But as luck would have it, things were in our favor. वो 30th को गुज्जर आंदोलन was called off, and we landed up in Bhopal.
हम 13 जने थे, 13 में से आई थिंक हम लोग कुछ 6-7 जने ही गए थे एंड वी सॉ दैट आवर नेम्स वर देयर इन द लिस्ट. हमें लेटर नहीं आया था बट स्टिल आवर नेम वाज देयर कि ओके दीज आर द पीपल कमिंग फॉर द एसएसबी इंटरव्यू. It was specific SSC naval constructors. No, it was for all the UES. Yes. It was a US direct call. Yes. तो सब कंजॉइन करके बुला लिया होगा. सब कंजॉइन करके बुला लिया था. एक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड Yes, सीएनसी सब एक साथ ना. सब एक साथ थे. एंड हमारा जो बैच था वो 200 लोगों का बैच था. उससे पहले भी हमारा जो बैच जिसका एसएसबी हुआ था वो भी 200 लोगों का था. तो हम जिस दिन पहुंचे उस दिन ओवरलैप था. तो हमने उनसे पूछा प्रीवियस बैच से कि भाई मतलब क्या रहा फाइनली आपका सिलेक्शन वगैरह. दे सेड 0 एंड वी वर लाइक 0. Everybody. एक को भी नहीं सेलेक्ट किया. ये क्या मतलब व्हाट इज दिस प्रोसीजर. उनको लेना नहीं है तो फिर बुलाया किस लिए. अब हम में से कुछ लोग ऐसे थे जो लोग प्रिपेयर करके आए थे कि यार एसएसबी क्या होता है. वहाँ लोग डिस्कस कर रहे थे यार ये आयरन विराट क्या होता है, विक्रांत क्या होता है. एंड हम में से कुछ लोग थे जो यार बस ऐसे आ गए थे क्योंकि किसी ने बोला था यार जाओ वहाँ पे, यू जस्ट एंजॉय द एसएसबी. तो हम तो उसी माइंड सेट से आए थे. और यहाँ देख रहे हैं कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं कि विराट क्या है, विक्रांत क्या है. हमें तो ABCD भी नहीं पता नेवी की. वैसे ठीक है ना, एंजॉय करने के लिए आए, लेट्स एंजॉय द एसएसबी. ऐसे ही लोग रिकमेंड होते हैं. एग्जैक्टली. सो यू हैव टू गो विद द ओपन थॉट कि यार ठीक है लेट्स एक्सपीरियंस दिस एसएसबी. ये मैंने भी मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद समझा है कि वी वर नॉट रिजिड कि यार नेवी ही ज्वाइन करना है, आर्म फोर्सेज ही ज्वाइन करना है. लोगों का जुनून होता है ना, अच्छी बात है, होना भी चाहिए. बट ऐसा नहीं था कि यार वही करना है बस. सो थिंग्स स्टार्टेड विद स्क्रीनिंग. First day, 148 people were, screened out and 52 were selected. So we were a total 52 who were screened in, and we stayed there for 5 days. We completed the entire SSB procedure, and out of 52, final conference mein there were 2 names. One was me and one was our coachmate Sahil Kapila. Kapila, okay. So when the names were announced, we two were there and we were very happy. Matlab personally, I got emotional also that time. So I called up my father then and there itself. वॉशरूम में जाके कि पापा सिलेक्शन हो गया, नाउ आ गया है, क्या करना है. उन्होंने बोला जयपुर आजा बात करते हैं. ठीक है जयपुर में बात करते हैं बट मैं अभी और नहीं आऊँगा, 6 दिन और लगेंगे, मेडिकल्स वगैरह होने थे. सो वी वर वेरी हैप्पी. एंड वो फिर आपको चेस्ट नंबर मिलता है, प्लस का साइन मिलता है. वो जो प्राउड मोमेंट था, इट वाज अमेजिंग. मेडिकल स्टार्ट हुआ, वहाँ पे सब क्लियर हो गया. मतलब दो वी बोथ वर क्लियर बट साहिल हैड सम हर्ट मर्मर एंड ही वाज टोल्ड कि ही विल हैव टू कम बैक मे बी आफ्टर अ मंथ और 2. लेटर ऑन दैट आल्सो गॉट क्लियर. सो वी वेंट बैक होम. That's how it started. and घर जाने के बाद ये कहानी खत्म नहीं हुई by the way. There were lot of setbacks. फैमिली ने तो मना किया ही किया कि जाना नहीं है अपना. ठीक है तुम जाके आ गए, SSB तुमने क्लियर कर लिया. I also had a job opportunity of a Maharatna company that time. It was a PSU, Naval Lignite Corporation LLC. They were offering around 10-11 lakhs in 2011. And the posting was also in Bikaner, which happens to be my again a native place. तो घर वाले और भी श्योर थे कि भैया अपने को तो PSU ज्वाइन करनी है, 10 लाख का पैकेज मिला है, बीकानेर में मिला है, और क्या चाहिए, जयपुर से 5 घंटे का रास्ता है, ये नेवी वगैरह अपने को ज्वाइन नहीं करना है. बट आई वॉज लाइक कि कुछ आउट ऑफ द वे करना है. हमेशा से दिमाग में फितूर था ये कुछ अलग करना है. तो मैं अड़ गया कि मेरे को तो नेवी ज्वाइन करनी है, मैं तो जाऊँगा वहाँ पे, देखेंगे बाद में जो होगा देखा जाएगा. सो धीरे धीरे टाइम आता गया. अप्रैल 2011 की बात है. आई हैड अ सीवियर सेटबैक. आई हैड अ बैक इंजरी. पता नहीं क्या हुआ उस रात को. वी हैड अ फेयरवेल पार्टी हमारी कोर्समेट्स की. एंड मैं आके सो गया. मॉर्निंग में अराउंड 4 o'clock वॉशरूम जाने के लिए उठना था, उठ नहीं पाया. मतलब मैं खड़ा ही नहीं हो पाया लिटरली. तो आई कॉल्ड माई फादर एंड मदर. वो आए, मुँह लगाया, थोड़ा मालिश किया, बोला ठीक हो जाएगा. मॉर्निंग में सेम थिंग, 7:30-8 o'clock उठ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ अपनी जगह से. सो इट टुक मी अराउंड 30 to 35 days. मेरा ट्रीटमेंट चला प्रॉपर, बहुत चीज़ें हुई उस दौरान. मेरे फाइनल एग्जाम्स थे 8 सेमेस्टर के, मेरा फाइनल प्रोजेक्ट था. बट माई कॉलेज वॉज वेरी फेवरेबल. मेरे HOD ने मेरे को बहुत फेवर किया. बोला यार मनीष तूने 7 सेमेस्टर कॉलेज को दिए हैं ना, विल टेक केयर ऑफ योर फाइनल एग्जाम्स एंड विल टेक केयर ऑफ योर प्रोजेक्ट. जो फाइनल भाई तो नेवी जा रहा है. नेवी भी जा रहा है. प्लस थिंग्स वर इंश्योर्ड. मतलब देर वॉज अ बेड फॉर मी इन द कॉलेज. लास्ट में मैं उस बेड पे सो के अपने एग्जाम्स लिखता था लिटरली ऐसे. एंड मेरा अकेले का प्रोजेक्ट इंटरव्यू लिया गया, जो कि किसी का कभी लिया नहीं गया होगा शायद. आई डोंट रिमेंबर कि मेरे एटलीस्ट ऊपर नीचे किसी का हुआ हो.
तो थिंग्स वर क्लियर फ्रॉम कॉलेज ऑल्सो, ठीक है सब कुछ हो गया। मैं जून 15 को पहली बार वापस शायद उठा था बेड से, थोड़ा चलने लायक भी हो गया था। मुझे इसलिए याद है वो डेट क्योंकि मेरे कज़न ब्रदर की शादी थी एंड मैंने कहा मैं जाऊँगा शादी में, जो जाना है। तो सबने बोला जाना नहीं है, जा नहीं सकता है, जो भी है। मैंने कहा जा कैसे नहीं सकता, 28 तारीख को मेरे को रिपोर्ट करना है नेवल अकेडमी। लोग बोलते हैं यार तू खड़ा हुआ है 15 तारीख को, तेरे को अब भी अकेडमी का फितूर है, अभी भी अकेडमी में जाना है। तो जो अपना ऑफर लेटर आया था ना, इट वाज मेंशन कि यू हैव अ 15 days ऑफ टाइम, इफ़ यू वांट टू कम बैक यू कैन कम बैक। तो मैंने वो बार्गेन किया अपने घर वालों के साथ, देखो इसमें लिखा हुआ है 15 दिन, मेरे से नहीं होगा, 15 दिन वापस आ जाऊँगा, आप मेरे को 15 दिन के लिए भेज दो बस खाली। मैंने वहाँ से उनको मनाना शुरू किया और मान गए, और 15 दिन का बोल कर गया था एंड वी कंप्लीट आवर ट्रेनिंग एंड कंप्लीट 10 साल बाद ही वापस गया तू तो। That's how the story about my Navy is all about. And this is very commendable because I remember you were in first inclusion in the cross country. I was the podium. You were the podium. Silver, yeah, second. So वो शायद मोटिवेशन ही था कुछ जो काम कर रहा था। मोटिवेशन क्या था कि यार जब खड़े हो गए अपन, भगवान ने अपने को खड़ा होने लायक कर दिया और अकेडमी भेज दिया है, तो किसी पर्पस से भेजा होगा। तो मैं जब उस दिन दौड़ रहा था ना क्रॉस कंट्री, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि जब मैं बेड पे था, उठ नहीं पा रहा था, खड़ा हो गया, अकेडमी आ गया, भाग भी रहा हूँ, तो क्यों ना आज कुछ ऐसा किया जाए कि यार अपन फर्स्ट एनक्लोजर में तो आए ही आए एंड पोडियम में लेके गया। अंग्रेज का नाम रोशन करके गया तू। Anyway, so yeah, guys, so we are from the same squadron. Yeah. And he's like he mentioned थोड़े दिन पहले जब हम ये शूट करने वाले थे, तो ये बोल रहा था यार 13 दिन उसी में सारे के सारे ही महारथी है। सबने कुछ ना कुछ अलग ही किया है लाइफ में। Very true, very true. Our course is very dynamic. Yes. 13 दिनों से। तो यार ये बता कि देन आई रिमेंबर कि 6 महीने पहले कंस्ट्रक्टर्स दे स्पेंड इन दी एकेडमी, अब तो खैर 1 साल हो गया है। Correct. ऑल ब्रांचेस 1 year इन दी इंडियन नेवल एकेडमी। तो व्हाट्स द करियर प्रोग्रेशन देन आफ्टर दैट, वेयर डू यू गो? सो नेवल कंस्ट्रक्टर्स का ना बहुत ही अच्छा करियर प्रोग्रेशन है, मतलब आई मे से कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट। आफ्टर योर इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड you go to shipwright school, then shipwright school, and now it is called as INS Vishwakarma, which is a naval unit in Visakhapatnam. You go there for your course conversion because people come from different background. There are people who are BTech in naval constructor itself, naval architect itself, and there are people from civil engineering, marine engineering, metallurgy. You already mentioned all those branches. So everybody comes there and they do a course conversion. Basic training is done that what a naval constructor is supposed to do, and what are his responsibilities over a period of time during his service tenure. So 6 months we spent there. We do onboard training also during that 6 months tenure. And when you say onboard मतलब जहाज पे जाएंगे? Yes, we go on board ships also. Hull maintenance. We look, what is hull, how hull is made, what are the systems which comes under the hull maintenance officer or the naval constructors, hydraulic parts of it or the equipments of it. We go on board ships and submarines both. We see them. We go to the dockyard also. We see how the refits are done. What are the critical things? What are the different departments in the dockyard, the repair yard, which we call as. So we see all those things onboard training is also done, and apart from that, the course curriculum which is there, we complete that part. After that, we do a compulsory diploma course from IIT Delhi, which is of 1.5 years. तो तुम IIT पहुंच गए फाइनली। So again you see, it was a dream कि IIT जाना था, but मतलब वैसे तो जा नहीं पाया IIT क्रैक करके, तो NIT जयपुर से बीटेक किया, नेवी ज्वाइन किया, तो नेवी ने बोला you go to IIT Delhi also, so it's an opportunity. When you go to IIT, it's a completely a different environment. Education level, if you see the other activities which happen inside the campus, it is an eye opener. So it's one of the best opportunity we had during their entire service tenure. तो कितने कंस्ट्रक्टर्स थे यार ऑफिसर्स इसमें? We were 20. 20 and all of them were short service, yeah? There was some. No, there was a mix NCW. of. Yes. We were 5 short service commission officers, and there were 10 NCW NEC officers, and apart from that there were 5 special naval architect scheme. There's a new scheme wherein officers were inducted directly who were doing BTech in naval architect from different colleges of the country, and they also join our batch. So we were 20 officers in. They don't undergo training. They don't undergo training at INA.
They do for a very brief period. I believe. I think 15 days or maybe 1 month 20 of days, training. okay. Basic training is important for everybody. So they complete their part. ये यूनिफॉर्म लौट है क्या? यूनिफॉर्म These are uniform people. अच्छा, Yes, okay. yes. I think they don't go for SSB, but they do go to the academy. अच्छा, ओके Yeah. ओके. सो देन ये सब खत्म कर दिया, हो गया. अभी फिर उसके बाद तुम्हारा पहला अपॉइंटमेंट कहाँ पे आया? So after completing the 1.5 year tenure at IIT Delhi, after we complete our worship design course from IIT Delhi, we get our appointment. So my first appointment was INS Kesari, Port Blair. It was my first choice which was given. After I think it was in the last semester of IT, you get an option to fill that which all appointments you want to go, option 1, 2 and 3. So my first option was on board Andaman Nicobar Island. I got INS Kesari, which was an on-board appointment at Andaman Nicobar Island. So my first choice was given to me. And when I was told कि you are going to Andaman and INS Kesari you have to go. INS Kesari is we call it as a elephant. It is so huge that we can have around 6 army tanks inside the ship. We can carry them for the amphibious operations during any mishap at the island. So my 1 year tenure as a hull maintenance officer on board was amazing. I'll tell you a few experiences. In my initial days itself, I just reported on board, and there was a overlap of 3 days only with my previous hull maintenance officer, and there was a setback. We had STP, sewage treatment plan. It was not operational, and we had to sail out in 3-4 days of time. There were some spares which were required, and they were not available on board in Andaman that point of time. So it was my first appointment. I didn't know what to do and how to reply to the commanding officer. He asked me, Manish, what is the status of the STP and what is the timeline for the repair of it? I had to say, sir, no, it is not possible. It may not be repaired because we don't have these spares and it may take time. ये तो ऑब्डफ है यार. He didn't tell me anything that time. मेरे को बोला ठीक है. मैं आ गया अपना वार्ड रूम में आके बैठ गया, which is our the officer's mess. After dinner around 8:15, 8:30, announcement was made. Hull maintenance officer requested commanding officer. Basically, CEO had called me. Captain's cabin. Captain's cabin. Not captain's cabin. Foxhole. Foxhole. He was taking a round on Foxhole after dinner, and I was also called there. So मेरे को बुलाया. मैं तब तक चेंज कर चुका था. I was in my CVs. He told me, HMO, आज मैंने आपको आफ्टरनून में बुलाया था STP के लिए. You told me कि सर नहीं हो सकता because spares नहीं है. It is your first appointment, gentlemen. I understand you gave me the right answer, but you need to understand that फौज में कभी मना नहीं करता है. So अब यार मतलब a fresh officer who comes for the first appointment don't know how to reply, and I told him whatever was the actual scenario. He said, then he told me that how you have to react to the things and how you have to convey it to your commanding officer. And मुझे इतना अच्छा लग रहा था, somebody is there to guide me now. Who was the CEO? Commander Mahesh. अच्छा. Mahesh. अच्छा. He told me कि you don't have to say no. You only have to say कि sir, I am managing space. If you are not able to manage space, you can ask me, sir, from where can I manage space, or this is not available at the moment. If I may be guided from where I can source it, we'll source it and we'll get it rectified. That's how you need to, answer your CEO. Because I have to sail, buddy, after 3-4 days. If you tell me कि no, then that means कि I cannot sail because it's an OPDEF. तेरे को सबसे पहले CEO ने ये सिखाया strategic sourcing क्या होती है. हाँ. So he told me, did you speak to other ships which are there in your vicinity? क्या same spare किसी के पास available है? मैंने कहा no sir. Immediately he told me कि you speak to these ships. He didn't call anybody. He just told me कि ये ships हैं, इनको आप call करो, आपको शायद spare मिल जाएगा. And मेरे को spare मिल गया किसी एक ship पे. Same size, same item number. And next day morning I told him कि sir, this spare has been managed and it can be repaired. It was repaired. So you see how we are guided by our senior officers, there in the service. Grooming, peer-to-peer learning. Yes. This is what we do. हाँ. तो अच्छा यार, लेकिन एक बात बता, केसरी के साथ में तो एक कुछ खास चीज़ है, बिकॉज केसरी आई थिंक गॉट कन्वर्टेड एज अ कैडेट ट्रेनिंग शिप. बिकॉज आई रिमेंबर आई हैड गॉन टू शार्दुल के बाद केसरी बना. तो एंड इट इज़ अगेन LSTL क्लास. तो
देन नाउ यू हैव ऑफिसर कैडेट्स ऑन बोर्ड. Yes. क्या मजा आया होगा ना यार ट्रेनिंग में. Amazing experience. See, you are on board a ship, and then you got an opportunity to be a part of a training squadron. So it's an experience in itself, that how you take care of the training of the 100 cadets who are there, cadet officers who are there on board your ship, and how the training is conducted for them on board. You have to cater for that space also. So we had the army messes on board, because if there is any operation, then we have that separate space for them. We converted that entire space into the cadet officers living areas. We converted a part of it to the washrooms. A part of it was converted to a kitchen also, because if 100 officers are there on board, you need to prepare food also for them. It cannot be prepared in the same galley. It has to be prepared in a separate place. So everything was converted within a span of time, because we were told immediately that after 30 days the cadets will be on board and you will be sailing out continuously. So 30 days of time was given to us. And again I remember that there was a similar incident, that I think we had some 72 hours of time or something like that, and we had a op-def. The front ramp of the LSTL class, the INS Kesari, it was not getting closed. And I think it was Ganesh Chaturthi ka long weekend. So the OEM of this was based out of Mumbai. I called him immediately ki we had the situation and we are not able to close the ramp and the door. He said कि सर यहाँ तो गणेश चतुर्थी की पूरी छुट्टी है, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, मुंबई में तो कुछ भी नहीं हिल पाएगा अभी तो. एंड वी हैव अ लॉन्ग हॉलीडे इवन इन अंडमान ऑल्सो, सो द लेबर वाज आल्सो नॉट अवेलेबल. स्पेयर अवेलेबल भी हुआ तो लेबर भी अवेलेबल नहीं है. सो एंड माई सीनियर मास्टर चीफ वॉज ऑन लीव. He was also not there on board. So I had only the junior sailors on board. So how do I take care of this defect now? I called up my master chief immediately कि माँ साहब ये काम ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया है ना, व्हाट डू वी डू. ही टोल्ड मी कि सर एक स्पेयर सिलेंडर आपको देयर इज अ कंपार्टमेंट, स्टोर कंपार्टमेंट, उसके नीचे भी एक कंपार्टमेंट है, वहाँ पे एक स्पेयर सिलेंडर पड़ा हुआ है. यू टेक इट आउट एंड यूज इट. यू सी हाउ स्मार्ट ही इज. स्पेयर सिलेंडर आई डोंट नो उन्होंने कहाँ से मैनेज किया था, कैसे मैनेज किया था और कब का था, बट ही न्यू इट की कभी ज़रूरत पड़ेगी, और वो उन्होंने अलग से रखा था, स्पेयर रूम में नहीं रख के कहीं सेपरेटली रखा हुआ था. एंड एग्जैक्टली मुझे वो स्पेयर सिलेंडर वहाँ मिला. आई टोल्ड माई सीईओ कि सर सिलेंडर हमारे पास में है, हाइड्रोलिक सिलेंडर जो हमारा लीक हो रहा था, नाउ वी ओनली नीड अ टीम टू रिपेयर इट. अब अंडमान में क्या था ना, द लेबर्स हु आर देयर, द वर्कर्स हु आर देयर, दे कम फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वाटर. अब छुट्टी के दिन वहाँ से बुलाना अगेन इज अ टास्क फॉर अस. NSRY 1 जो रिपेयर यार्ड था हमारा. सो माय सीईओ हैड सम कॉन्टैक्ट. NSRY कोची? NSRY पोर्ट ब्लेयर. पोर्ट ब्लेयर. Because I'm talking about Port Blair. So he called few people there, few officers there, and things were tied up. And he said कि HMO वर्कर्स भी अवेलेबल हैं, तुम तो काम करवाओ, मेरे को सेलिंग करनी है 3 दिन बाद. सो डे इन डे आउट 72 आवर्स वी वर्कड फॉर द रिपेयर ऑफ दैट सिलेंडर. वो पूरा सिलेंडर हमने पहले वापस निकाला, उसके बाद में उसको पूरा स्टेजिंग वाज डन टू लिफ्ट इट अप, बिकॉज इट वाज वेरी ह्यूज सिलेंडर एंड इट वाज वेरी हेवी. The cylinder was lifted, it was put in place, the door and the ramp were closed on time, and we sailed on time. We sailed to a different yard and the entire refit was done. The decks were changed, the galley was made, the washing space and which I was mentioning, everything was done, and we sailed out with the training cadets. 1TS. Yes, 1TS. We went to different countries also. We went to Bangladesh, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia. So we had a wonderful experience with the training squadron. तो एटसी HMO क्या करता है यार? देख ऑफिसर कैडेट्स तो वॉच कीपिंग कर रहे होंगे, एक्स ऑफिसर्स मेरे जैसे तो वॉच कीपिंग कि यार 150-200 लोग सो रहे हैं, आर दे सेफ और नॉट. तो देयर जॉब इज टू मेंटेन अ वॉच एट सी. बोलते हैं ना कि इंडिया स्लीप पीसफुली, वी हैव द वॉच. सो दैट्स द नेवी विच इज गार्डिंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन्स. So that's exactly what Navy does. So I'll touch upon the watch keeping part first. HMO का रोल्स मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ, बिकॉज वॉच कीपिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग है और मेरा इंटरेस्ट बहुत था उसके अंदर. सो हमारा कोर्समेट है रोहित धनखड़, ही वॉज ऑल्सो देयर विद मी ऑन बोर्ड केसरी. जब भी उसकी वॉच आती थी ना, मैं ब्रिज में चला जाता था क्योंकि मुझे समझना था वॉच कीपिंग में करते क्या हैं और कैसे करते हैं. एंड शिप में बिकॉज अगर नाइट शिफ्ट है आपकी 4 आवर्स की, 8 to 12 या 12 to 4 है, mostly you have time, you can take out that time and you can be a part of a watch keeping officer who is there in the bridge and you can see what he is doing. Duty watch. So I always used to be there with him. मुझे बहुत अच्छा लगता था उसके साथ वहाँ बैठना. एंड वो जब ऑपरेट करता था पूरी शिप को,
तो वो क्या करता था, हाउ यूज टू नेविगेट, हाउ यूज टू चार्ट द थिंग्स, एक डिस्क का यूज़ करके. उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मेरा इंटरेस्ट खत्म होता था 2-3 घंटे बाद, मैं ऊपर जाके एकदम टॉप डेक पे बैठ जाता था और वहाँ पे तारे देखता था. क्या एक्सपीरियंस होता है वो, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस कहीं और नहीं मिल सकता. यू नो, पिच डार्क एंड दो स्टार्स आर देयर एंड द ब्लू वाटर, अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस. 3000 stars and planets you can see, right? बोलते हैं ना naked eye से pitch You dark. can see, you know, where it's raining. It may not be raining in your vicinity, but समंदर के अंदर कहाँ बारिश हो रही है वो आपको दिखता था. That is the visibility that is there. Full moon. फुल मून वाले दिन भी. हाँ. अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस. सो दैट इज ऑल अबाउट वॉच कीपिंग. हाँ. ठीक है, बिकॉज मेरे को अच्छा लगता था इसलिए मैं जाता था. आई विल टॉक अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द हल मेंटेनेंस ऑफिसर. देयर आर सर्टेन इक्विपमेंट्स व्हिच आर अंडर एवरी डिपार्टमेंट. सो as a hull department, I used to look after certain equipments, hydraulic equipments, STP, the lowering and of the ribs and all other things. Rib is basically rigid inflatable boats. Yes. So they are the ones which actually extend the arms of a ship की हाँ यार थोड़ा दूर जाके कुछ देखना है, वापस आना है ना. The speed is also very high. Yeah. And being the LSTL class, you have a lot of hydraulic equipments on board INS Kesari. The ramps are there. There were 2-3 ramps. Then there are hatches which operate hydraulically if you have to carry a cargo. So all those things are there. All those equipments are under us. One interesting equipment which is under the hull maintenance officer is the STP. Is the most notorious, equipment. Nobody want to touch that. And if anything goes wrong during the sailing, then you'll have to repair it because you don't have any choice. And it happened with us during sailing. Our STP was not working, and वो भी कौन सा CEO का STP बंद हो गया. So the news was कि CEO का STP बंद हो गया. HMO तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, you have to repair it. And as I said कि मेरा मास्टर शिप ऑलरेडी पहले से छुट्टी पे था, so I had the junior sailors on board. And we were able to identify that where the defect is. One of the line was choked. Now you have to open that line, clean it, then only the STP will be up and working, the sewage plant. I had to tell my sailors ki we'll have to open this particular line and we'll have to clean it. Now there were 3 junior sailors. 2 were okay with it. One was slightly hesitant कि सर ये line कैसे खोलेंगे सर, कैसे क्लीन करेंगे. So I told him, you get one more additional pair of gloves for me. I wore those gloves. I started opening all the bolts. It was in the engine room. That line was going through the engine room. वहाँ ऑलरेडी इतना गर्मी था. वो एक अलग एस्पेक्ट था कि यार इतनी गर्मी में भी काम करना है, बट जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना. एंड लाइन तो खोलनी है, देख, I'll not name him, but I told him कि देख लाइन तो खोलनी है, क्लीन भी करनी है, we know it, we have to repair it. So I will go and do it. The other 2 were there with me. He also joined. We wore our gloves and opened that line, took it to the deck, and then you have all the equipment. You don't have to touch anything. You have the pressure gauge with you. You have the high pressure water with you. You operate with it. It was clean. Put it back. Repaired. Thereafter, he never told me कि सर मैं नहीं करूँगा. So ये भी चीज़ फौजी सिखाता है आपको कि यार you have to lead by example. If you are doing it on your own, your sailors will automatically join you. And that happened with me. And for the next rest of the 7-8 months, I never had any complaint for him कि सर ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. So a good experience. तो ये overseas deployment में you mentioned you must have sailed in Malacca Strait and all of that, right? Strait of Malacca. First time. First time Malacca Strait देखा होगा तूने. So you saw the entire Eastern Theater की the passages that lead to South China Sea, and you cross that equator and you have that ceremony of drinking that water. Amazing experience. और सीओ का भी कुछ होता है, सीओ के साथ भी कुछ करते हैं जब इक्वेटर क्रॉस करता है जहाज तो. It was not done. अच्छा, तो जहाज पे नहीं होता. Okay, maybe. So anything interesting? I think I believe you have some interesting stories to share while coming back from one of the OSDs. I think. Yeah. What happened? So I think I have never told this before, not even to my wife also. So when we were coming back from Indonesia, we had a small incident. There was one suspicious boat, and we were trying to coordinate with him and speak to him ki what exactly things are, but he was not responding to any of our signals, not even the Morse codes, not to our communication system.
So then we encountered that something is wrong there. Announcement was done that boarding team to muster, and rest of the things were briefed to us that what is to be done. That was the first time I came to know that what boarding operations and what boarding things are to be done. So I was briefed by my XO that you'll have to go and chase that ship, and you'll get a command, open fire. Then only you will open fire. Otherwise, you will not open fire. So it's a wonderful experience. We went, we chased the boat. It was around 5:15 in the evening, nearing to the sunset. We lowered our ribs and we started chasing that boat. This guy was very smart. He switched off his light because he knew कि sunset होने वाला है. Light बंद कर दो, किसी को कुछ दिखेगा नहीं. Because there was a lot of swill, and swill के अंदर rib, obviously we were not able to take a particular aim, and we were also not able to clearly see that boat. But we tried our best. We chased him for a good 20-30 minutes. But then we were going out of the Motorola range with our headquarters, that is the bridge commanding officer. So after some time he told us that Manish, you come back because we are going out of the range, and otherwise you will be lost in the sea. So we had to come back. When we came back, we sat and then we discussed what was it. It was one of the encounters, I can say, one of the experiences which we have done during the या वैसे तो हम लोग बहुत बड़ा बोर वाला चीज फायर करते हैं ना, 100 mm AK-100. वो तो कर दिया तो फिर तो what is going to happen. Yeah, but we also play with 5.56 mm and Yes. these days 7.62 also And in the certain carbine. cases, and Yeah, carbine yeah. also. So but yeah, I mean that's really interesting है ना. At sea अगर live boarding operations में हो तुम एकदम, Yes. this is like non-compliant, only Marcos do it, but you have also done it, so that's very unique, right? Yes, one of the unique. फिर इसके बाद क्या किया यार? Where did you go after this? So after Andaman tenure, just when I completed my 11 months, our officers from DNA, who happens to be the headquarters for the naval constructor officers, they had visited Andaman. We had a interaction with them. So they were asking all the constructor officers who were posted in Andaman on board and various other units, where all you want to go now on your next appointment. So generally after 1 year, you go to NSRY, Port Blair. Your next appointment is either that or the FDN. The trend has always been like this. But I told him, sir, I want to go to Kolkata. Why Kolkata? I didn't know. But मेरे एक सीनियर थे जो मेरे साथ में IIT दिल्ली में और शिपराइट स्कूल में थे. वो वहाँ पोस्टेड थे. उन्होंने मेरे को बोला, यार इट्स वन ऑफ दी बेस्ट प्लेस टू वर्क एज अ कंस्ट्रक्टर ऑफिसर. यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर देयर. इसीलिए बस मैंने उनको बोला कि सर कोलकाता भेज दो. वहाँ पे WT कोलकाता में Warship Overseeing team. So what exactly is Warship Overseeing team? या करती क्या है ये team? So there are various indigenous projects going on in India. The warships are being constructed, and we are one of the few navies who construct their own ship, design and construct their own ships. So these contracts are given to the PSU shipyards like Garden Shipyard, MDL, Cochin Shipyard is there, Goa Shipyard is there. So whether they are being constructed as per the designs given by our directorates or not, that's what is the job of the warship overseeing team. They oversee the entire project. All the equipment which are being installed, they are tested. The sea trials are done. Once all the trials are done satisfactorily, then only that ship is handed over to the Indian Navy. So we are eyes and ears of the Indian Navy, who ensures that the construction quality is best of the standards which is being constructed at GRSC or MDL or any other shipyard. So that is the role of warship overseeing team. Which projects you were looking after there? So in 2015, May 2015, I got an appointment letter to join WT Kolkata. When I joined there, I was given the project of P-28. ASW Corvette. ASW Corvette. I think Kamorta class है ना? Yes, it's Kamorta class. So there were 3 ships. One of the ship was already launched and it was nearing the commissioning. That was not with me. The rest 2 ships were still to be launched, and there were a lot of work related to hull and other equipments. So they were with me in the initial days. I looked after that project. It's a ASW Corvette, and the launching of both the ships was done under my tenure only. I was a part of the project that time.
and once it was launched, it was handed over to the different group which looks after the commissioning of the ship. Apart from P28 project, I have handled other projects there. 8 LCUs were constructed in GRSC. That project was looked after by me. There were 4 fast attack crafts, water jet crafts. That was also with me. Apart from that, there was a new project which came to us, which was Project 17 Alpha. It was one of the unique project because for the first time, modular construction was supposed to happen in India, and I had been a part of that project, and it was again a wonderful experience for me because as a part of that project, I was deputed to Fincantieri Shipyard, Italy, for 45 days, the longest duration so far for any constructor officer to be there. I learned, how the modular construction is done there and how we have to implement same technology here and start modular construction in India. What's the dollar value of this project here, P17 Alpha, which you're looking after? It was worth 28,000 crore. You're the project officer. I was the project officer. So now you're doing budgeting, you're doing P&L, you're doing sourcing, procurement, strategic sourcing, man, capital management, planning. क्या क्या कर रहा है यार तू बैठ के? इतना कुछ कर रहा है. That's the beauty of the armed forces. When you are in force, you just don't do, the core job of yours. You do all the multiple roles that are, which happens inside any organization. Because यहाँ पे ऐसा नहीं होता that you hire a separately a CA or you hire a separate, marketing guy or sales guy. It's you only who will look after the entire thing. There are secondary roles which are given to you. There are ADAM roles, there are management roles, there are, HR management roles. That's the beauty of the armed forces. So, being a project officer, you look after everything. You'll have to look after the budgeting, you'll have to look after the P&L, you have to look after the timelines, you'll have to manage the manpower. So, everything is there under your control. So, it's a huge exposure that you get when you are, handling projects of such, enormous importance. So then, I think it was not just the GRSC, right? Because I remember I was building SSB Kolkata that time. Yes, correct. We were there. You were commissioning. I think it was not just the GRSC part. I think because I believe that I was building SSB Kolkata that time, Yes. right? So वहाँ पे I think you had another 2-3 shipyards that you were looking after. Titagarh, Shalimar, कुछ. Correct. Right. So all the shipyards which are in the vicinity of West Bengal, including the Kolkata also, like there were shipyard like Shalimar was there, Titagarh shipyard was there, corporate shipyard was there. So they were also being looked after by the warship forcing team Kolkata only, and the projects which were there like fuel barges, water barges were there. So they were being constructed there, and we were looking after the overseeing part for that also. In fact, there was one of the shipyard which was going into red that time. But it was a very good shipyard. My boss, who happens to be my HOD, he always used to say, yeah, this is one of the, he may be a small shipyard, but one of the best shipyard. The MD and the team who was there, it was very good. He was the project officer for the entire shipyard. So he said, yaar, we'll have to revive the shipyard. Otherwise, we'll lose one of the best of the, resources that we have. So we discussed, we sat on it, where we were going wrong, or where the shipyard was incurring, losses, or where we can do cost cutting. Everything was discussed with the MD of that shipyard. कि आप हमें एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि कहाँ हम आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट यू अगेन कम बैक टू ग्रीन. Things were highlighted. There were issues wherein there were delays happening. Shipyard में it's all about the timelines. The more early you deliver, the more you will be in green. Because आपका जहाँ प्रोजेक्ट डिले हुआ, आपका कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, मैन पावर हो या फिक्स्ड कॉस्ट हो, जो भी हो. When you say red and green, ये red and green क्या है? Overheads and profits. I'm talking about the P&L only. अच्छा. P&L going into red means you are going into negative. P&L going into green means you are going into profit. So it was going क्योंकि into वो red. लेबर कॉस्ट Yes, अफेक्ट करती है. yes, Mandates it was affecting like anything. Because छोटे प्रोजेक्ट्स थे, वाटर बार्जेस थे, फ्यूल बार्जेस थे. छोटे प्रोजेक्ट्स में भी अगर डेडलाइंस हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, that means something is wrong. So we identified all those issues which were there. So few issues were with respect to the execution, like the labor issues were there, wherein the timings were not proper. So we highlighted all those things to the MD and we told him to take corrective measures. Second part was the delay in the supply of the few equipment which are coming from the various OEMs, from the country or maybe from the other countries.
सो उसके लिए वी मेड अ टीम एंड वी डिसाइडेड कि लुक, माई बॉस टोल्ड मी कि यार मनीष, वील हैव टू गेट इनटू इट एंड वील हैव टू पर्सनली टाई अप विद द कस्टम्स नाउ, बिकॉज वहाँ 15 दिन इक्विपमेंट आके रखा हुआ है. एक तो हमारा टाइम लॉस हुआ, दूसरा हमें वहाँ पे स्टोरेज चार्ज भी देना पड़ रहा है, तो दैट विल हैव टू रिड्यूस. सो आई पर्सनली वेंट टू द कस्टम्स ऑफिस, met the officer there, asked him what are the challenges there. There were actually no challenges. He said कि यार अगर हम प्रॉपरली प्लान करेंगे ना तो पॉसिबल है कि 2 दिन के अंदर आपको इक्विपमेंट डिलीवर हो जाएगा आते ही. And we ensured that. We understood from him कि sir what are the documents that you need so that this equipment which has come to your customs can be handed over to the shipyard. And trust me, mostly all the equipments which were coming from the other OEMs through the customs route were handed over to the shipyard on time. We made sure within a day or within 2 days of time it was handed over. We shrinked all the timelines. Shipyard got revived and again it came into green and new projects were awarded to him. So it was also one of the experience, though I was a part of that project, my HOD was handling it, but then for me it was an experience कि यार you have to go on ground, understand कि issue क्या है, root cause क्या है, उसी को आप खत्म कर दो, your things will be sorted. So कितने कमिश्निंग और कितने लॉन्चेस देखे होंगे यार? Good question. मैंने इतनी कमिश्निंग और इतने लॉन्चेस देखे उस ड्यूरेशन में जो शायद कुछ ऑफिसर्स अपना पूरा 20 या 30 ईयर्स का टेन्योर भी निकाल देते हैं और एक कमिश्निंग और एक लॉन्च भी नहीं देख पाते हैं फॉर वॉट एवर रीजन. बट आई वॉज अ लकी ऑफिसर हु वॉज देयर एट द राइट टाइम. आई हैव सीन 13 लॉन्चेस एंड 12 कमिश्निंग्स. मतलब इट इज़ एन एक्सपीरियंस. लॉन्चेस व्हेन आई से, मतलब इवन इफ यू सी द वीडियो ऑफ अ लॉन्च ना, यू विल बी अमेज्ड. एंड मैं तो वहाँ पे खड़ा था जब वो शिप लॉन्च होती है ना, पहली बार जब वो पानी के अंदर एंटर करती है. व्हाट एक्सपीरियंस इट इज़, अमेजिंग. एंड आई हैव सीन बोथ द लॉन्चेस, द साइड लॉन्च एज वेल एज द फोर एंड हाफ लॉन्च. बोथ आर यूनिक. इन टीटागढ़ आई वाज हैंडलिंग वन ऑफ द प्रोजेक्ट, सो दैट वाज अ साइड लॉन्च एंड मैंने उससे पहले 10 लॉन्च ऑलरेडी कर लिए थे, तो इट वॉज अ ईजी गोइंग थिंग फॉर मी. फर्स्ट लॉन्च में जरूर डर लगता है आपको कि कुछ हो गया तो क्या होगा, बट उसके बाद बैक टू बैक इतने लॉन्चेस हुए कि अपने को समझ में आ गया था कि कैसे लॉन्च होनी है. साइड लॉन्च पहला एक्सपीरियंस था. कील लेइंग भी देखी है किसी की? या P17 अल्फा जो था, आई वाज द प्रोजेक्ट ऑफिसर फॉर दैट प्रोजेक्ट एंड द कील लेइंग वाज डन बाय ड्यूरिंग, आई मीन व्हेन आई वाज द प्रोजेक्ट ऑफिसर. एक बार समझाएगा कील लेइंग क्या होता है? So keel laying is a very emotional thing for the shipyard because it is the first plate which is cut for any particular project. So the first plate when it is cut is called as a keel laying. जो हम कहते हैं ना नींव रखी जाती है. So it's that ceremony and it's a very important ceremony and वहाँ पे पूरा पूजा के साथ में ये काम किया जाता है. The workers who are there, they are very emotional to this particular activity and I've seen the keel laying of P17 Alpha. Is it one of the strongest part in the ship's hull? Yes, it is the main part of the ship's hull. ठीक है यार, मैं एक्स ऑफिसर हूँ. You know everything. So then comes the most interesting part in your life यार. इसके बाद तू कहाँ गया? So after completing the 3 years at GRSE, मैं उससे पहले का एक स्टोरी बताता हूँ. जब व्हेन आई वाज देयर इन शिपराइट स्कूल फॉर द इनिशियल 6 months कोर्स ना, विच आई सेड की कोर्स कन्वर्जन होता है हमारा. सो व्हेनेवर वी यूज्ड टू गो टू द डॉकयार्ड, हमारे रास्ते में लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग आती थी, शिप बिल्डिंग सेंटर, SBC इसको बोलते थे. सब ये बोलते थे यार ये ब्लैक होल है, क्या होता है कुछ नहीं पता, और इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है, पर वहाँ कोई जा नहीं सकता है. वहाँ आपको स्पेशल परमिशन चाहिए होती है अंदर जाने के लिए. वर्कर्स के भी पास बनते हैं, उनका भी बहुत लंबा प्रोसीजर है. दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड एंड अब तो मुझे पता भी है क्या होता है. सो इट टेक्स 6 months इवन फॉर अ वर्कर ऑल्सो टू टेक एन अप्रूवल टू गो इनसाइड दैट. सो मेरे साथ वही हुआ. इच्छा थी हमेशा से कि यार ये अंदर होता क्या पता तो चले. शिप बिल्डिंग सेंटर के अंदर गार्डन रीच का मेरा WOT का टेन्योर कंप्लीट हुआ और लेटर मेरे पास में अपॉइंटमेंट लेटर आया शिप बिल्डिंग सेंटर. तुम SBC पहुँच गए. आई रियली डोंट नो, मतलब ऐसा लगता है कि शायद सितारे काम कर रहे थे. जो चाहा मैंने वो नेवी ने मुझे दिया. शिप बिल्डिंग सेंटर वॉज माई नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग वॉशीपोर सिंह टीम कोलकाता का टेन्योर. बट वो एक चैलेंज भी था मेरे लिए क्योंकि माई डॉटर वॉज जस्ट 15 days ओल्ड और मुझे बोला कि इमीडिएटली आई हैव टू मूव. सो आई वॉज इन अ डायलेमा कि यार 15 days की ये डॉटर है और मैं पूरा का पूरा घर शिफ्ट करके वहाँ SBC जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या मैं एक्सटेंशन लूँ या मना कर दूँ. तो मैंने जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया तो मुझे बोला गया कि वहाँ पे इमीडिएट रिक्वायरमेंट है. इफ़ यू रिफ्यूज़ हो सकता है एक्सेप्ट हो गया तो समबडी एल्स विल बी अपॉइंटेड. तो मैंने
मैंने कहा यार ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाएगी अगर मैंने मना कर दिया और किसी और आ गया. So I discussed with my family also. They said कि ठीक है, you go, we'll take care of rest of the things here. Family was very supportive. So I opted as in you don't have a choice, but I then decided कि ठीक है, I'll go for this appointment immediately, and I reported immediately to Shipbuilding Center, and the experience there is ultimate. I'll tell you about the procedures there. When you report to Shipbuilding Center, you get an appointment letter only Shipbuilding Center. You don't know where you are going to be there or what role you are going to play there. So you have an initial orientation course of 7 days. You meet all the officers there. You go to all the departments there, and after that you have an interview with the PDSBC. So based on that interview, your department will be decided. So वहाँ जाने के बाद में एक चीज़ समझ में आ गई थी कि यार सब डिपार्टमेंट्स का अलग अलग रोल है, बट प्लानिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है who has the bird's eye view on each and everything which happens inside SBC. तो अब अपना वापस से वही यार प्लानिंग मिल जाए तो बेस्ट हो जाएगा, सब पता चल जाएगा ये क्या होता है इस ब्लैक होल के अंदर. और वैसे मैं हल ऑफिसर था, कंस्ट्रक्ट ऑफिसर था, तो मुझे जाना शायद हल डिपार्टमेंट में था क्योंकि वहाँ पे भी एक ऑफिसर वाज मूविंग आउट. तो 99% तो यही था. इनफैक्ट मेरे को डिपार्टमेंट ने बोला था कि यार आप हल में ही आओगे बिकॉज यहाँ पे ऑफिसर जो है ही इज़ गोइंग ऑन ट्रांसफ़र, सो वैकेंसी भी है, तो यू हैव टू कम हियर. बट मेरी अंदर से इच्छा थी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट जाना है. एंड यू सी PDSBC wrote on my file planning. And again the quotient of happiness was so high कि यार आपने चाहा प्लानिंग आपको मिल गया. चल ओपन फोरम में तो ये अवेलेबल है, लेकिन यही बता दे कि SBC एग्जैक्टली है क्या. सो नाम तो शिप बिल्डिंग सेंटर है, बट दोस्त वहाँ बनती सबमरीन्स हैं. एंड वी नो कि वहाँ कौन सी सबमरीन्स बनती हैं. न्यूक्लियर सबमरीन्स आर बिल्ट इनसाइड शिप बिल्डिंग सेंटर, एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल दोज प्रोजेक्ट्स. एंड इट वाज अ प्राउड मोमेंट बिकॉज पूरी कंट्री के लिए ही प्राउड मोमेंट था जब फर्स्ट टाइम अरिहंत कमीशन हुआ था. इट वाज वन ऑफ द मोमेंट फॉर द एंटायर कंट्री. एंड जब मैं वहाँ गया एंड आई वेंट ऑन बोर्ड दैट बोट फर्स्ट डे जब मैं गया था, तो दैट फीलिंग इटसेल्फ वाज अमेजिंग कि यार जो कंट्री का प्राइड है, आज मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, एंड आई हैव बीन ऑन बोर्ड दैट बोट. दो I didn't have the qualification to sail on that boat because submariners are specialized to be on board. But yes, as a part of my maintenance routine for that boat, I have been on board Arihant, I have been on board Arighat, I have been on board Chakra, and looked after various works on board all those ships. So यार the moment you are saying that कि now let's say it's a complex asset, right? And you're a part of the planning and organizing team, the department, which as I understand जैसे डॉकयार्ड्स में होता है ना, जो शिप्स का रीफिट एंड मेंटेनेंस देखते हैं. correct. तो द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली इट इज़ बजटिंग, स्पेयर पार्ट्स, फोरकास्टिंग, स्पेयर्स, एंड देन देर आर वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स जिनका मैरिज आके वहाँ पे ही होगा. Yes. ताकि तुमको पता चले एग्जैक्टली कि मेरे को 6 महीने बाद क्या चाहिए, 9 महीने बाद क्या चाहिए, इमीडिएटली 1 महीने में क्या चाहिए और अगले 4 घंटे में क्या चाहिए. Right. So you have that full bird's eye view as well as the details also. So how do you manage to actually get so many things together on one platform akele and then you have so many assets also, right? Yes, So yes. how does it actually happen? The planning and organizing is very complex here. So that's the beauty there, there's a slight difference between the planning team of the, submarine refit or the maintenance or the, construction part, then the shipyard part. यहाँ पे क्या है ना, द टाइमलाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि टाइमलाइंस वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे इनिशियली व्हेन वी हैड ओनली वन बोट एंड इफ दैट इज ऑल्सो कमिंग इन रिपेयर, यू डोंट हैव टाइम बिकॉज यू नो दैट देयर इज नोबडी एट सी राइट नाउ, सो you'll have to repair it on a war footing. And submarine is a very complex structure. वहाँ पे एक कंपार्टमेंट में 3 टीम्स एक साथ काम ही नहीं कर सकती, unlike ships. So you'll have to plan it meticulously. You have to make a routine of entire 24 hours that ये 3 घंटे कौन काम करेगा, उसके बाद 3 घंटे कौन काम करेगा, इस कंपार्टमेंट में कौन कौन टीम काम करेंगी, क्या सेम टाइम पे 3 टीम्स काम कर सकती हैं. ऐसा भी होता है कई बार पॉसिबल है दैट 3 टीम्स कैन वर्क
parallelly in one compartment if three different equipments are there. But if the same equipment is there and the three different teams are there, then you have to look after कि कौन सा part कब आ रहा है, so which work will start after which work. So a lot of planning goes during the repair part of it. Apart from that, the construction part of the new boat, that is also very important, because it's so compact and there are hundreds of kilometers of cabling that is happening inside that boat. There are 10 to 15 kilometers of plumbing work going on in that boat. Planning all those things is a task in itself, and that experience is amazing. So it also means you must have handled multicultural, multinational teams, and we used to interact with Ministry of Defense. We used to interact with the OEMs, the DMD, which is the material supplier for the nuclear boats, and our headquarters ATVP. We also used to speak to our Russian counterparts. So all those things you have to take care of the every small groups and integrate everything and ensure that the final product is delivered. What's the feeling, man, कि इसके बाहर निकला तू, and then now you saw कि अभी I think Arigat also got commissioned and all, right? Yes. तो it must have been a feeling ना यार, इसको बनते देखा है and commission भी हो गया ये. जिस दिन वो commission हुआ था ना, and when I saw the news, because even I was not following it up and I never communicated any of the people there, because मुझे पता था कि how confidential things are, and I make it a point कि जब मैं उस जगह हुई नहीं तो I need not know it. But जिस दिन वो commissioning वाला news देखा ना, I was so feeling proud about it, because उस जहाज का first submergence trials मैंने करवाया था. The first time when it submerged into water, those trials were conducted by me. It took me around 8 to 9 hours on that day to complete those trials, and वो पूरे 8-9 घंटे along with all the other senior officers being present for those trials and continuously monitoring all those activities which were happening कि वो trials कब connect करना है, कैसे conduct करना है, क्या क्या करना है. That's a pride moment when you see कि okay आज वो finally जहाज commission हो गया, उसके trials complete हो गए हैं, and it has been handed over to Look at the tempo of operations ना, कितना fast चीजें होती है ना. Yes. 24 hours you are thinking outside the box, thinking through first principles, या backtrack कर रहा है, and the customer obsession is so high because I think ATVP is outside the naval parlance, and it says that ki Indian Navy is your customer, although the naval officers are working. So the customer obsession is so high. Yes, it's very that high. You have to deliver it within the time. Because see, people from the Apex committee, they are directly monitoring, each and every timeline ki किस डेट पे आपने क्या एक्टिविटी कंप्लीट किया है. The Apex body meetings, whenever they happen, one of the discussion agenda has always been this part, what happens inside HBC. So we have to stick to our timelines and we have to deliver on time. There are senior dignitaries who are monitoring the progress of construction and as well as the repair part of the boats. So this is the time you must have come across a lot of VIPs and VVIPs and पता नहीं क्या क्या ही किया होगा. वो एक्चुअली पता ही नहीं था कि VVIP है क्या, because every 10 days we had a visit. वो ऐसा लगता था कि जो स्पेशल फोर्सेस वाले हैं वो वहीं पे रहते हैं शायद, क्योंकि हर थोड़े दिनों में used to be a visit. People were monitoring, people from ministry, people from senior officers from Navy and secretariats. They used to visit and see the progress of the boats. नहीं यार, I mean this is one of the class experience of your life, I would say. Yes, कि definitely, अच्छा no मैं doubt. पहले 15 दिन करके आता हूँ, देखता हूँ 15 दिन में एकेडमी जाके नहीं हुआ तो वापस आ जाऊंगा. 10 साल तक वापस ही नहीं आया. और जब वापस आ रहा था ना तो किसी ने आने नहीं दिया. फैमिली जब जा रहा था तो किसी ने जाने नहीं दिया. 10 साल बाद बोला मैंने छोड़ना है, तो आई वॉज द ओनली वन इंक्लूडिंग माई वाइफ, शी वॉज ऑल्सो नॉट एग्रीइंग टू इट कि नहीं छोड़ना. क्यों छोड़ना भाई, तेरे को यार अच्छी भली लाइफ तेरी चल रही है, अच्छा काम तू कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, कंटिन्यू इट ना. Because you thought that you were so damaged that I have now fucked up beyond any repair. So then comes the FUBAR. Yeah. This mindset was definitely beyond any repair. मैंने ठान ली थी कि मुझे जयपुर शिफ्ट होना है. That was my main thought कि I have to shift back to Jaipur and फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने पेरेंट्स के साथ रहना है एंड कुछ फ्रूटफुल करना है. So the thing was to build a brand. ये बता, पहले ब्रांड का नाम कैसे सोचा?
Fubar. So, ये ऐसे ही आया, मतलब कि यार अब ये दिमाग में फितूर बैठ गया है, एंड इट इज़ नाउ नॉट गोइंग बैक. फिर आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू वन ऑफ द सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, द लास्ट शिप. So where the captain of the ship says Fubar. So it means fucked up beyond any repair. So this word is very catchy, and somehow it was, you know, relating to my story also कि you know I have decided कि मेरे को क्या करना है, यही करना है. आप सब लोग मना कर रहे हो, नहीं छोड़नी, बट मैं छोड़ूंगा और मुझे कुछ ना कुछ यूनिक करना है. So I have decided on it. So let's name it fucked up beyond any repair. And Fubar is a good catchy name also. So that's how this name was decided, and the birth was given to the fashion brand Fubar. So, from building thousands and thousands crores of ships and submarines to building a 250 crore empire now, it's a completely bootstrap business. बढ़िया है, धंधा तो खून के अंदर ही है, ठीक है. Nothing like an MBA or so many others who are trying to scorch for a seat in the corporate world कि ये सर्टिफिकेशन है क्या, वो सर्टिफिकेशन है क्या, ये MBA है क्या, ISB से पढ़ा है क्या, IIM से कुछ कोर्स कर लिया है क्या. All things talking side. about IIM. I'll tell you another story of IIM also. Sorry, I had to cut you. So वो कहता है ना, ड्रीम होता है कि यार इंडिया में क्या है, NIT है, IIT, IIM है. सो हमारा जो लास्ट लेग ऑफ सर्विस होता है ना, उसमें हमें एक कोर्स करवाते हैं, PRC. करेक्ट. सो आई हैड जस्ट फिल्ड द फॉर्म कि एक PRC कोर्स कर लेते हैं. दो आई वाज नॉट वेरी प्रो टू इट, बिकॉज मुझे पता था कि तब तक मेरा बिजनेस थोड़ा सा क्लिक कर गया था, एंड आई न्यू इट कि आई हैड टू ज्वाइन बिजनेस. सो फॉर्म फिल कर दिया था कि यार ठीक है, IIM लखनऊ अगर कोर्स मिल जाता है तो. एंड 26th of March आई गॉट अ कॉल. 26th of March 2021, कोरोना चल ही रहा था उस टाइम पे, कि यू हैव टू रिपोर्ट टू IIM लखनऊ फॉर द PRC कोर्स. एंड आई वॉज कन्फ्यूज अगेन कि यार अभी बिजनेस का भी ग्रोथ देखना है, अभी कोर्स के लिए गया तो 6 महीने कोर्स में लग जाएंगे. बट देन अगेन एवरीबडी टोल्ड मी कि यार इट्स एन अपॉर्चुनिटी, तुम जाओ, बिजनेस तो 6 महीने बाद भी हो जाएगा. एंड आई ऑप्टेड फॉर इट, वेंट टू IIM लखनऊ फॉर दिस 6 months of PRC also. So that's what Navy gave us, you know. IIT Delhi was an opportunity, then IIM Lucknow, 6 months of course, and then the entire grooming that happened in the, you know, span of 10 years. जो आप बता रहे थे भी कि ये एक सर्टिफिकेट कर लिया, वो सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया. आई डोंट थिंक, मतलब ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, कॉर्पोरेट में रिक्वायरमेंट है एंड फ्यू थिंग्स आर मैंडेटरी, बट एज बिकॉज दे हैव मेड इट दैट वे. एग्जैक्टली, दे हैव मेड इट. अदरवाइज यू सी पीपल हु आर देयर इन सर्विसेज, आर्म फोर्सेज में जो भी एक ऑफिसर है या और हमारे जवान हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं देखा है. They have managed manpower, they have managed funds, they have managed Adam rules, they have managed, you know, you say that agility is required, adaptability is required. फौज में तो सब है ना यार, agility भी है, adaptability भी है, risk management भी है, everything is there. प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स तो भर के हैं, टेक्निकल भी है. And then you look after the accounts also. Yeah. You have to do the accounting of various funds which are there in our armed forces. So the kind of exposure that defense forces has given it to us, I don't think we require any certification. But if it is a mandatory part, that is a separate part. But yes, I can vouch for it that we don't need any such certification. And I'll tell you, the corporates are looking for veterans. Why they are hiring veterans? Because they know he is already a guy with whom you can give the multi-role appointments. So tell us about Fubar now. Yeah, so ये असली चीज़ है. Fubar, it started in 2018 when I was still there in GRSC, WT Kolkata. Just that I had a discussion with one of my friend when I visited Jaipur. He said कि यार e-commerce ना बहुत बूम पर है आज की डेट में. तो I said चल भाई e-commerce ही कुछ करते हैं, because business तो करने का हमेशा से था, and Fubar already दिमाग में आ चुका था कि यार ये नाम है, कहीं ना कहीं तो उसको यूज़ करेंगे. So I launched this brand Fubar in 2018, and मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं who supported me कि sourcing is not a problem, तेरे को जो चाहिए तो हमसे ले ले, तेरे चले तो ठीक, नहीं चले तो मुझे वापस दे देना. That's what you need. But most critical part was कि business start कैसे करना है. अभी तो सब वो GST and all these things are compulsory. So again my wife happens to be a chartered accountant. She said कि तू भूल जा, सब काम मैं कर दूंगी. पैन कार्ड चाहिए बस तेरा. So पैन कार्ड दे दिया उसको, बैंक अकाउंट डिटेल दे दी, GST रजिस्ट्रेशन हो गया, GST नंबर आ गया, फॉर्म रजिस्टर हो गई. And my brother, younger brother Abhishek, who was there with me in Kolkata, he initially started everything.
how to list on e-commerce platform, how to do photo shoot. We did everything on our own. हमने किसी एजेंसी को हायर नहीं किया, जीरो से हमने स्टार्ट किया, सब काम खुद ने सीखा पहले यूट्यूब पे देखकर कि यार कैसे करना है. आई थिंक दैट हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ आवर बिजनेस ऑल्सो एज वी स्पीक टुडे. आज हमें सब आता है. अगर हमारा कोई एक भी स्टाफ छुट्टी पे चले जाए ना, तो वी आर 3 ब्रदर्स, वी कैन रिप्लेस हिम एनी टाइम. उसका काम हम तीनों में से कोई भी आराम से कर सकता है, बिकॉज हमने जीरो से स्टार्ट किया था, सब काम खुद ने किया था हमें. सो ही स्टार्टेड दैट पार्ट, लिस्टिंग्स करना, ई कॉमर्स पे लाइव जाना, आर्टिकल्स का फोटो शूट करना. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. एंड जब कुछ 50-60 ऑर्डर आना शुरू हो गए थे दिन के, सो आई हैड टू शिफ्ट टू विशाखापट्टनम. मेरा ट्रांसफ़र आ चुका था SBC में. सो वी शिफ्टेड दिस बिजनेस टू जयपुर, आवर होम टाउन, because that's the beauty of e-commerce. You can operate from any part of the country. So Abhishek is my younger brother. He was looking after the business from Jaipur, and back-end वाला जितना भी part था, whether it was speaking to the executives from Flipkart or sourcing of raw material or finished goods or the capital part of it, that I was handling remotely sitting at Visakhapatnam in my own time, office hours के बाद में. वो मैंने टाइम अंकिता से मांग लिया था कि यार देख, मेरे को ऑफिस से आने के बाद 2-3 घंटे चाहिए बस इस बिजनेस के लिए, सो दैट यू हैव टू गिव इट टू मी. शी वाज वेरी सपोर्टिव. ठीक है, यू बिल्ड इट. एंड व्हेन आई वाज रिटायरिंग इन 2021, वी ऑलरेडी हैड अ गुड presence in the market. Fubar was a well-known brand, at least in Flipkart that point of time. So we were confident कि नेवी छोड़ने के बाद में क्या करना है हमको. So I shifted post-retirement to Jaipur, and then we decided कि यार we'll have to scale it up now, क्योंकि अब मैं भी full time involved हो गया हूँ, so इसको अब थोड़ा scale up करते हैं. We discussed with Flipkart also कि that what are the opportunities to scale and which all verticals and where are the gaps. So they guided us well कि these are the gaps and these are the things where you should build on your inventory, and we will support you. So I immediately shifted to a new warehouse, which was around 7,000 square feet area. Earlier we were operating from 1,500 square feet area, and suddenly shifted to 7,000. I don't know what vision was there. सोचा तो था कि 3-4 हज़ार से काम हो जाएगा, but then ठीक है, पसंद आ गया था 7,000 square feet, तो शिफ्ट कर लिया. And within 1 year we saw a huge spike, around 4 to 5 times jump in our business. And thereon we kept on building. Year on year we increased our warehouses. Today we have got a space of 20,000 square feet area, and we have a warehouses present all across the country in 7 different states. West Bengal, Karnataka, we have a space in Telangana, then Maharashtra, Haryana. So all those spaces we are utilizing, and we have expanded into multiple verticals also. We started with shirts, but now in menswear almost we manufacture all the all verticals we are present into. Fast fashion. Anything premium? Last year we have started something premium also. We have launched Fubar Eletrix. It's a slightly premium wear brand, wherein the shirts and trousers have already been launched. Otherwise, our main motto so far has been to launch affordable fast fashion, so that we can target the mass audience. Okay. So, and now that's grown to, I think, 250 crores. Yeah, the valuation is nearly to that only, and last year we did 100 CR of business, the cross GMV. Wow. That's a remarkable feat. धंधा, बिजनेस, फुबर परिवार को मनीष कटेला का नमस्कार. So as I said, all these traits you already have got engraved in you, during your service tenure, which are required, to do any business. It is just that you need to take that additional effort and take that risk. I can tell you, every retired officer or the Jawan of the Fauj can take this initiative and build his own business, build his own empire. Because business में जो चीज़ें चाहिए आपको, वो सब हैं आपके पास में. You have to manage man, you have to manage funds, you have to manage, you have to take some risk, and you have to do sometimes, multi roles also. So all those things you can, you already have it in you. You can easily start everything. I would, anytime vouch for it that every ex-Fauji can easily undertake all these jobs and have his own empire. Yeah. चलिए यार, अगर ऐसे बात करने बैठ जाए ना तो आई थिंक द पूरा दिन ही निकल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम मनीष. आई नो you've come here for some professional work, of course the Fubar part, but all the very best to you. I hope that this goes way beyond
इवन योर इमेजिनेशंस की फूबर और कितना बड़ा बनेगा, एंड जब फिर हम कई सालों बाद देखेंगे तो द फास्ट फैशन किंग. I hope so. Thank you so much once again. I hope guys that you like this show because I wanted to make you guys understand कि अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग कलर्स की तरह है. जब ये एक साथ जुड़ती है तब ये रेनबो बनता है. And naval constructor is one of those branches. Officers who are tasked, men who are tasked to build the ships and submarines for the navy, and just building ships and submarines was not one of the jobs, because you also get exposed to real life threats and operations at sea, which is very very different from the army operations or the CICT operations, but they are also very important for us. Do like, share, subscribe, comment, and I hope you like this show. Stay tuned. Thank you. Thank you so much, Nikhil. It was a wonderful experience with you, and I wish all the best to Roger that with NKC. You're doing wonders already. You know, I have seen almost all your episodes, and it's one of its kind. Again, a unique thing that you are, coming out with. Officers from different backgrounds. I think you are touching upon all the cadres and all the experiences. It's a good thing for even फौजी ऑफिसर और जवान ऑल्सो, बिकॉज उनको भी नहीं पता है कि हमारी कितनी कैडर्स हैं और किसका क्या क्या रोल है. सो जो हमारे यंग जनरेशन है, जो हमारी 18 साल की 16 साल की जनरेशन है, 20 साल की जनरेशन है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है. बिकॉज उनको पता चलेगा एटलीस्ट कि आज विद इन आर्मी नेवी एयरफोर्स विच आर द डिफरेंट कैडर्स, किसका क्या रोल है, कौन क्या कर रहा है, किस तरह के ऑपरेशन हमारे पास्ट में हुए हैं, या क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं. आई डोंट थिंक बाहर जो लोग हैं उनको शायद पता भी है कि हम शिप बिल्डिंग में करते क्या हैं, क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या शिप्स हमारी इंडिया में बन रही हैं. थ्रू आई थिंक रॉजर दैट विद एनकेसी यू आर एजुकेटिंग द एंटायर कंट्री, एंड द वे यू आर फ्लरिशिंग, आई एम श्योर वेरी सून एवरीबडी विल नो कि अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू हैव टू कम ऑन रॉजर दैट विद एनकेसी. थैंक यू सो मच वंस अगेन. Hey man, thanks. Love. Bye bye. बाय.